Welcome to Lab 1 channel. Today I show you how to repair UNIT power supply. It's not allowing me to set 0.8 volt or 1 volt. You can see it's still on 3.2, 4.3 volt. Sometimes it's fluctuate voltage 19 to 25 volt. Sometimes it's decrease the voltage. Let's repair this supply. As you know, the voltage fluctuation is harm for electric equipments. It's a 33 volt and 5 volt ampere power supply. I repair many of this supply. The same procedure on all. It's a unity. The same procedure work with all companies. We need to change these potentiometer. One tip for you: if you think the only voltage potentiometer is faulty, if you change the only volume voltage potentiometer, it's not going to work properly. You have to change for those four potentiometer for proper work.
You can see the job is done. Now it's allow me to set 0.8 volt or any volt I want to select. Remember one thing, you have to change all those potentiometers, then it will work great. Now in Hindi, मेरे पास ये यूनिटी की सप्लाई थी जो कि ख़राब हो गई थी. इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये मुझे 1 वोल्ट या इससे कम वोल्ट या 2 वोल्ट सेलेक्ट नहीं करने दे रही थी. तो इसमें प्रॉब्लम थी कि ये वोल्टेज जो है इसके कम ज़्यादा नहीं होते थे. अगर जितने मैं कम करना चाहता हूँ ना, 1 वोल्ट करना चाह रहा था या 0.8 वोल्ट करना चाह रहा था, वो मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं ये सेट करूं. और क्या होता था कि सडनली अगर मैंने ये 19 वोल्ट पे रखी हुई थी सप्लाई अपनी और मैं लैपटॉप चेक कर रहा था, तो उस दौरान क्या होता था कि ये सडनली चली जाती थी तकरीबन 20 वोल्ट पे, 24 वोल्ट तक पहुंच जाती थी, 32 वोल्ट तक चली जाती थी. उससे क्या होता था, जो मैं काम कर रहा था तो मुझे उसमें प्रॉब्लम आ जाती थी और काम ख़राब होता था मेरा. इसलिए कि अगर मेरी चीज़ें ख़राब ना हो फिर मुझे ये सारा चेंज करना पड़ा. ये मैंने पहले भी चेंज की हुई है, ये प्रॉब्लम पहले भी आया था हमें दूसरी पावर सप्लाई में. ये यूनिटी की है, वो दूसरी पावर सप्लाई थी, उसमें भी प्रॉब्लम आया था. हमने सोचा शायद ये वॉल्यूम वाला जो है पोटेंशियोमीटर, वॉल्यूम वाला जो है ये ख़राब हुआ होगा, सिर्फ ये वोल्टेज बढ़ाने वाला. तो ये चेंज किया था, लेकिन उसमें ये चेंज करने के बाद भी वो काम नहीं किया. फिर हमें उसमें भी ये सारे ही चेंज करने पड़े, ये 4 के 4 चेंज करने पड़े, फिर जाके ये मेरा काम ठीक हुआ. और अब ये स्टेबल है, जहाँ पे भी मैं रखता हूँ इसको, जितने भी वोल्ट पे वो स्टेबल रहता है, 1.1 भी ऊपर नीचे नहीं कर रहा. तो पहले मसला ये था कि ऑटोमेटिकली इसमें ये ऊपर नीचे स्पाइक्स आता था, कभी वोल्टेज और जो से ज़्यादा हो जाते थे, कभी कम हो जाते थे. तो अगर आपकी भी ऐसी पावर सप्लाई को मसला आ रहा है तो आप ये सारे ही चेंज करें. मेरे वाली पावर सप्लाई में ये 1K की पोटेंशियोमीटर जो था 1K का था. आप अपने चेक करके तो फिर उस हिसाब से पोटेंशियोमीटर आप चेंज करें, तो आपकी ये पावर सप्लाई बिल्कुल ओके हो जाएगी. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.